Previously, we discussed about basis for assessment, use of assessment, informed consent in assessment, release of test data, and test construction. Now, we will be discussing interpreting assessment results, assessment by unqualified person, obsolete test and outdated test results, test scoring and interpretation services, explaining assessment results, and maintaining test security. Let's continue from Standard 9.06 Interpreting Assessment Results. किसी भी फर्द के सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए असेसमेंट के रिजल्ट्स की सही इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन करें, उनको चाहिए कि वो टेस्ट के पर्पस और टेस्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए इंटरप्रिटेशन करें ताकि एरर से बचा जा सके। Therefore, Standard 9.06 guides that when interpreting assessment results, including automated interpretations such as computer-based interpretations, psychologists take into account the purpose of the assessment. सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करते वक्त उनको असेसमेंट के पर्पस को कंसीडर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी असेसमेंट किसी भी किस्म की इंटरेस्टेड पार्टी से प्रेशराइज्ड ना हो. Beside this, psychologists should consider factors associated with the testing context. They should consider the examinee's test-taking abilities and other characteristics that may affect or inappropriately biased interpretation. For example, they may take into account test-taking styles, fatigue, perceptual or motor impairment, illness of the client, linguistic factors to ensure whether client is having limited fluency in the language of the test or not. Besides these factors, they should also consider cultural familiarity with test items. तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि सिर्फ टेस्ट के स्कोर के बेस पर इंटरप्रिटेशन ना दें, बल्कि इन तमाम फैक्टर्स को भी कंसीडर करें क्योंकि ये सब फैक्टर्स इंटरप्रिटेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा वो क्लाइंट के ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेंट से ली गई मालूमात को भी कंसीडर करें. इसके साथ साथ स्टैंडर्ड 9.06 साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि उन्हें अपनी इंटरप्रिटेशन में किसी भी किस्म की लिमिटेशन को वाज़िया करना चाहिए. मसलन किसी भी अनरिलायबल और इनवैलिड रिमार्क को फर्जी तौर पर पेश किया जाए और उसकी बेस पर कोई भी हतमी रिमार्क्स ना दिए जाएं. स्टैंडर्ड 9.07 prohibits assessment by unqualified person. The standard guides that psychologists do not promote the use of psychological assessment techniques by unqualified person. तो साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रोफेशनल और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए और इंश्योर करें कि टेस्ट का यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन वगैरह कॉम्पिटेंट और एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट करें और अनक्वालिफाइड या इनकॉम्पिटेंट पर्सन की तरफ से दी गई साइकोलॉजिकल असेसमेंट को प्रमोट ना करें और ना ही ऐसे लोगों को असेसमेंट करने के लिए हायर करें जो कम तालीम याफ्ता हों और उनकी टेस्टिंग और असेसमेंट में एक्सपर्टीज़ ना हो. लेकिन यहाँ पर यह बात वाज़िह रहे कि स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने से नहीं रोकता, जैसा कि यहाँ पर वाज़िह किया गया है, एक्सेप्ट व्हेन सच टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड फॉर ट्रेनिंग पर्पस विद अप्रोप्रिएट सुपरविजन. यानी ट्रेनीज किसी सुपरवाइज़र के अंडर असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, मगर साइकोलॉजिस्ट को इस किस्म की असेसमेंट का मकसद वाज़िह करना चाहिए और ट्रेनिंग कराते हुए कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए. मसलन ट्रेनीज इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हों और वो किसी ग्रेजुएट या डॉक्टोरल प्रोग्राम में इनरोल्ड हों. इसके अलावा सुपरविजन ट्रेनिंग के लेवल के मुताबिक की जाए और ट्रेनिंग का मकसद स्टूडेंट को इनिशियल टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करना हो. इसके अलावा जो स्टूडेंट ट्रेनिंग में टेस्टिंग और असेसमेंट कर रहे हों, उनको चाहिए कि वो क्लाइंट या उनके लीगल गार्डियंस को बताएं कि टेस्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए की जा रही है, ना कि इंडिविजुअल की असेसमेंट के लिए की जा रही है. स्टैंडर्ड 9.08 इज़ अबाउट ऑब्सलीट टेस्ट एंड आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट्स. ऑब्सलीट और आउटडेटेड टेस्ट मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होते. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस वक्त उनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इस्टेब्लिश ना हुई हों. तो स्टैंडर्ड 9.08 उन साइकोलॉजिस्ट पर अप्लाई होता है जो टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन करते हैं. इसके अलावा उन साइकोलॉजिस्ट पर भी अप्लाई होता है जो टेस्ट रिजल्ट्स और इंटरवेंशंस के डिसीजन और रिकमेंडेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो ये स्टैंडर्ड दोनों को गाइड करता है कि वो आउटडेटेड टेस्ट और टेस्ट डेटा यूज़ ना करें. सेक्शन ए ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज़ एड्रेस्ड टू द यूज़ ऑफ टेस्ट स्कोर्स, सो साइकोलॉजिस्ट डू नॉट बेस देयर असेसमेंट or intervention decisions or recommendations on data or test results that are outdated for the current purpose.
ہو سکتا ہے کہ پریویس اسکور کسی بھی ٹیسٹ کے اپ ٹو ڈیٹ ورژن پر لیے گئے ہوں، لیکن ان کی بیس پر ڈیسیژن میں ٹائم گیپ آ سکتا ہے اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو سائیکالوجسٹ کو پریویس ایڈمنسٹریشن اور کرنٹ نیڈ فار اسسمنٹ کے درمیان ٹائم گیپ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ Likewise, Section B is for the psychologist who use a test for administration. So in doing so, Section B guides that psychologists do not base such decisions or recommendations on tests and measures that are obsolete and not useful for the current purpose. We will continue our discussion from previous topic. Next, Section C highlights that psychologists retain responsibility for the appropriate application, interpretation, and use of assessment instruments, whether they score and interpret such tests themselves or use automated or other services. تو سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ ٹیسٹ کی سلیکشن اپروپریٹ کرے، ایکوریٹ اسکورنگ کرے، خواہ وہ خود ٹیسٹنگ کرے یا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ کرے یا کوئی اور سروسز استعمال کرے۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ٹیسٹ پراپرلی اسکورڈ ہوں اور صحیح انٹرپریٹیشن کی جائے، اور ایسی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن نہ کریں جو غلط ڈائگنوسس کی طرف سے لیڈ کریں، جس کی وجہ سے غلط ٹریٹمنٹ پلان دیا جا سکتا ہو۔ اسٹینڈرڈ 9.10 از اباؤٹ ایکسپلیننگ اسسمنٹ ریزلٹس۔ خواہ سائیکالوجسٹ خود اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کریں یا اپنے امپلائیز اور اسسٹنٹ سے کروائیں یا کمپیوٹر بیسڈ اسکورنگ کریں یا کسی اور پروفیشنل سے خدمات لیں، ان کو چاہیے کہ وہ کلائنٹ کو یا اس کے گارڈین کو یا کسی اور نمائندے کو اسسمنٹ کے ریزلٹس کی ایکسپلینیشن دیں۔ So basically the purpose of this explanation is to enable our client to understand the meaning of a test score or interpretation. ساتھ ہی ساتھ ان پہ یہ بھی واضح کریں کہ اسکورنگ کس نے کی ہے۔ Therefore, the standard guides that regardless of whether scoring and interpretation are done by psychologists, by employees or assistant, or by automated or other outside services, psychologists take reasonable steps to ensure that explanation of results are given to the individual or designated representative. But there is an exception. If psychologists examine a relationship precluded the explanation of result, for example, when testing is court-ordered, then it is inappropriate to provide explanation. لیکن ایسی سچویشن میں سائیکالوجسٹ کو کلائنٹ یا پیشنٹ کو ایڈوانس میں ہی ان لیمیٹیشنز کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ لاسٹلی، اسٹینڈرڈ 9.11 از اباؤٹ مینٹیننگ ٹیسٹ سیکیورٹی۔ ٹیسٹ سیکیورٹی میں ٹیسٹ سے ریلیٹڈ مٹیریل پر ایمفیسس کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ مٹیریل کی ٹرم ٹیسٹ ڈیٹا سے بہت مختلف ہے۔ ٹیسٹ مٹیریل میں ٹیسٹ کے مینولز، انسٹرومنٹس، پروٹوکولز اور کوشچنز شامل ہیں، تو سائیکالوجسٹ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیسٹ کے مٹیریل کو سیکیور کرے اینڈ دے میک ریزنیبل ایفرٹس ٹو مینٹین دا انٹیگریٹی and security of test material and other assessment techniques consistent with law and contractual obligations and in the manner that permit adherence to this ethic code. اور یہ ethics نہ صرف فیلڈ سیٹنگ میں اپلائی ہوگا بلکہ جب سائیکالوجسٹ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوں تب بھی انہیں ٹیسٹ کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اب تک دیکھا کہ جب بھی سائیکالوجسٹ اسسمنٹ کنسٹرکٹ کریں، یوز کریں، ایڈمنسٹر کریں، اسکورنگ کریں یا انٹرپریٹیشن کریں، انہیں ہر سٹیج پر کلائنٹ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور کلائنٹ کے اسکورس کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے ریزلٹس کی سیکیورٹی کو بھی مینٹین رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ایتھکس کوڈ کے لاسٹ اسٹینڈرڈ تھراپی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔